Um, Hello brothers. Am I live? 100%. Let's check the stream's quality. Let's see, bhai. Let's see. Ru- Hello brothers. Am I live? Yes, the quality of stream is really great. Okay, थोड़ा वेट करते हैं, ठीक है? For the people to join. तो मैं म्यूट कर रहा हूँ. Okay. Now let's go on and continue our stream. Okay. So yesterday I did give you this trade idea. ठीक है भाई. तो या मार्केट कई इधर पे था, ठीक है? इधर से मैंने ऐसा एक ट्रेड प्लान दिया था जो कि एग्जीक्यूट हुआ था व्हेन आई वाज हैविंग माय लंच इन द मॉर्निंग. ओके, तो आई कुडंट टेक दिस ट्रेड. ये एक अच्छा ट्रेड हो सकता था, मगर चलो कोई बात नहीं. वी कैन लिव. बट जस्ट राइट बिफोर स्टार्टिंग दिस लाइव ये हुआ. एंड आई जस्ट मिस्ड. कोई बात नहीं. अगेन. ओके, तो हमारा मोटिव क्या है स्ट्रीम का? टू प्रोवाइड नॉलेज. ओके, सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस गाइस. There are a lot of shit people, who just talk and do nothing. So yeah, let's just ignore them. Okay, here let me just do this real quick. Okay, sup guys. So let me do my part of analysis. According to me, this thing was bullish until we saw this move, but it was not a kind of really great move. This inducement did make it to reverse. तो कोई बात नहीं. ओके ओके. ठीक है. तो अभी आर्ली टाइम फ्रेम तो ये बता रहा है 4 आर्ली टाइम फ्रेम अभी क्लोज नहीं हुआ है. इन द 30 minutes टाइम फ्रेम this did give closing. It could be bullish or bearish, either side. अगर पे liquidity sweep हुआ है, let's just remove all these drawings, um, नहीं, actually तो हमें इसी ड्राइंग्स पर अपने खुद का ड्राइंग्स करना पड़ेगा शायद से. इधर पे डिमांड था, इधर से लिक्विडिटी लिया मार्केट में. सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस गाइस, आई एम रियली सॉरी. um, इधर से भी लिक्विडिटी लिया. दिस इज अ लिक्विडिटी स्वीप. Here is another liquidity point.
again here is also liquidity point. This lookout range is now, yeah, the work is done. And yes, ये भी एक liquidity range है अभी. This just did become a supply kind of. देखते हैं, is this a supply or is this will just continue. Okay, so according to this market structure 60 minutes टाइम फ्रेम पे देखते हैं. एक सेकेंड गाइस, लेट्स जस्ट लोड. और भाई लोग, क्या हाल चाल? आपका सब क्या चल रहा है? इधर पे थोड़ा भोंदू लोग हैं इसीलिए ये सब बैकग्राउंड नॉइज सारे. जस्ट इग्नोर दैट. अरे भाई लोड हो जा, ये क्या हो रहा है? ओके ओके ठीक है 60 मिनट्स पर थोड़ा नाटक कर रहा है, 30 मिनट्स पर शिफ्ट होता है. तो अकॉर्डिंग टू दी 30 मिनट्स टाइम फ्रेम, हमने अभी भी एक प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं देखा था. ओके, दिस वाज द लोअर हाई, दिस इज द लोअर लो, एंड वी आर राइट नाउ एट द काइंड ऑफ अ लोअर हाई, क्योंकि दिस स्ट्रक्चर एंड बेरिश टिल नाउ. इधर पे अपने को स्ट्रक्चर को गौर से देखना पड़ेगा. Okay guys, I know there's a lot of disturbance, sorry for that. मैनेज इट भाई. अगर क्वालिटी कंटेंट देखना है तो मैनेजमेंट आपका भी रहना चाहिए. तो या लाइक, लेट्स सी, दिस इज या, मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा था. दिस वाज इंटरनल लोअर हाई, दिस इज द इंटरनल लोअर लो. मगर अब भी इधर पे कंटिन्यू करेगा टुवर्ड्स द डाउन साइड. This will become the official lower high, this structure. Okay, we will watch this somewhere around here. Okay, हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे दिस थिंग राइट ओवर हियर. इसको रिमूव कर देते हैं, इसको भी रिमूव कर देते हैं, इसको भी. And if I mark it like this will become a retracement kind of liquidity. Okay, तो इसको भी रिमूव करते हैं. This is kind of like um, swing shift high time frame range. इधर पे कंसोलिडेशन, दिस इज काइंड ऑफ, इसको मार्क कर सकते हैं लिटरली. दिस इज द कंसोलिडेशन. लेट्स सी भाई इधर पे क्या होगा. अकॉर्डिंग टू दिस, मैं मेरे पुराने ड्राइंग्स नहीं रिमूव कर रहा क्योंकि यार एक्स्ट्रा काम कौन नहीं करेगा इतने लेट आने के बाद स्ट्रीम में. तो या लाइक मैनेज. Our bias for today will be waiting. Waiting is also bias, guys. This is created by me. Okay. लोग बोलते हैं आज का बुलिश बायस है, न्यूट्रल बायस है, बेरिश बायस है. नहीं, आज का बायस वेटिंग वाला बायस है. लेट्स जस्ट सी, क्योंकि दिस इज नॉट bullish bias or even a bearish bias. We can say it neutral, but seeing this previous move, this cannot be said as neutral. तो ये एक वेटिंग बायस है at this particular level.
तो या लाइक लेट्स जस्ट वेट। यार अपने को ये मूव देखने के लिए मिला था, ठीक है। एंड दिस इज़ अ प्रोफेशनल सप्लाई। प्रोफेशनल सप्लाई क्या होता है भाई, आई डोंट नो। तो या मार्केट ने इधर लिक्विडिटी ली है। एंड अगर मैं 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखूँ, ओके 60 मिनट्स, ओके, तो इधर पे एक प्लानिंग हो सकती है ऑफ कोर्स, क्योंकि इधर पे एक इंड्यूसमेंट था। इंड्यूसमेंट इंड्यूसमेंट किधर पे है? यस, दिस इज द इंड्यूसमेंट। मेरा वॉइस आ, ठीक है, वॉइस तो आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दी this higher time frame, this is kind of a lower high which is not confirmed. We are at currently here, that's why अब हम वेट करेंगे कि कुछ तो हो मार्केट में, ठीक है। एंड दिस वाज काइंड ऑफ लाइक क्या मूव बोलते हैं, रिट्रेसमेंट लिक्विडिटी। एंड फॉर अ थॉट, इससे हम कह सकते हैं बायर्स की लिक्विडिटी स्क्वीज अगेन। दिस होल रेंज एक बायर्स की लिक्विडिटी स्क्वीज हो सकती है। लेट्स सी व्हाट दिस विल बिकम, क्योंकि ये एक काइंड ऑफ डबल बॉटम है। एंड रुको, देखते हैं, देखते हैं, ऑफ कोर्स देखते हैं इधर पे क्या होगा, क्योंकि इतना बड़ा एक मूव आ चुका है which is kind of making a sense into the market structure that इधर पे हम एक सेलिंग वाला ट्रेड ले सकते हैं। मगर अगर ये लेवल ब्रेक कर गया तो सेलिंग वाला ट्रेड विल बी नॉट वैलिड। मगर या जैसा कि मैंने कहा, आवर बायस इज वेटिंग, तो वेटिंग वाला बायस है। लेट मी चेक फ्रॉम माय इंडिकेटर। ओके, इंडिकेटर तो बता रहा है दिस इज अ गुड लेवल। I mean, kind of like this is a good place to be into seeing charts. Okay, ठीक है, that's a good point. इधर पे हमारे इंडिकेटर्स बबुए क्या कह रहे हैं? um, yeah, the 21 EMA is, yeah guys, this is a 21 EMA जो कि मैं यूज़ करता हूँ, और this is the 200 EMA। देखते हैं। यह हमें 21 मूविंग एवरेज का EMA क्या बता रहा है कि दिस इज बेरिश, but yeah, the price action is not really confirming itself. मोस्टली क्या चांसेस हो सकते हैं कि ये बेरिश में कंटिन्यू करे, क्योंकि अगर इसको बुलिश जाना है तो इट शुड मेक अ स्ट्रक्चर राइट फ्रॉम हियर, क्योंकि दिस इज डिमांड। देयर आर लॉट ऑफ शिटी पीपल गाइस, जस्ट इग्नोर देम, who are making a lot of noise. Okay, so what could we do is, if this breaks this levels, this, yeah, of course, shitty people. This is a CSD base, kind of, and let's just wait, guys. Okay, might as well. This could be a CSD base. Yeah, like let's just wait. I will not speak. Okay. If you have any questions, anything to ask, you can ask. You are free to ask. Okay. तो इधर से कुछ डिसीजन निकालते हैं मार्केट से, ठीक है। आई मीन लाइक इफ यू सी इट रियली क्लोजली, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे भी दिस इज अ रियली क्रूशियल पॉइंट फॉर द मार्केट, ठीक है। We cannot say anything यार, just by saying this we cannot say anything. वेट करते हैं भाई, वेट करते हैं, क्योंकि इधर पे एक डिमांड वाला लेवल है जो कि मार्केट अभी ही टैप इनटू कर रहा है उसमें। व्हाट वी कैन डू इज, अगर हम बुलिश ट्रेंड लेंगे तो इधर पे मार्केट स्ट्रक्चर में कंटिन्यूएशन मिल सकता है। इफ़ वी टेक
sell over here, the market could just go up. So best thing to do is just waiting. Okay, let's just wait, guys. I will mute. Okay, let let me have my what you say, snacks kind of. Yes. तो चार्ट्स पर शेयर करते रहते हैं. भाई, अभी नोटिस किया मैंने, बीटीसी और गोल्ड का सिमिलर स्ट्रक्चर है. 100% सिमिलर. दिस इज गोल्ड, दिस इज बीटीसी. कोई डिफरेंस नहीं है. नो डिफरेंस. ये होता है भाई ये. ठीक है. लेट्स जस्ट वेट. आई म्यूट अगेन.
Hello, hello. I'm back. So, okay, okay. Demand is kind of working over here, but let's not see all of the basis off of that to take a bullish trade. गोल्ड में क्या चल रहा है अबे भाई गोल्ड भाग गया. Oh no, this is crude oil, man. Okay, okay, okay. My bad, my bad. There are a lot of shitty people, guys, who are making all of these background noises. Fuck them. See, like गवार, फुल गवार, गवारपंती भाई. गवार लोग की कमी नहीं है दुनिया में. Okay. Um, the gold. Okay, gold is bearish. Okay, there's no doubt it's bearish. Upon shifting on a 1 minute time frame. Okay, I missed the trade. Sorry. Wait, bye. Like this can be. I don't know what to say, man. Really. BTC इधर से एक अपसाइड वाला ट्रेड देख सकते हैं अगर इफ यू वांट इट रियली लाइक समथिंग लाइक दिस मे बी पॉसिबल आई थिंक अगर आपको अभी के अभी ट्रेड चाहिए तो दिस इज द ट्रेड एंड एंड फॉर योर इंस्टेंस आई डू नॉट रिकमेंड दिस एट ऑल ओके ये ट्रेड क्योंकि दिस कुड रिवर्स easily as getting zero in final exams. You know what I mean? तो इसीलिए बाय. um, 5 minutes time frame on gold. गोल्ड को देखते हैं. Okay, interesting, really interesting. गोल्ड तो क्योंकि all of this was liquidity, all of these levels were swept. Let's move all the drawings. Let's keep the chart clean. Okay. इंडिकेटर को भी रिमूव करते हैं. Okay, so we will see the price over here, and of course at the current price level and over in here. Okay, इन सब एरियाज पे हम प्राइस को देखेंगे. इधर पे मैं एक टाइमर लगा देता हूँ, आई मीन लाइक अलार्म, so we could get notified. If you want to take this trade, this is a really bad trade, but yeah, you know you can trade this. If I think to take a trade in here, मुझे क्या कंफर्मेशन चाहिए कि रुको यार, let's see. This could really work out. Don't get me wrong. This could really work out. क्योंकि here is an inducement, a break of structure level है. This is also a break of structure. Liquidity sweep, consolidation, double bottom liquidity sweep, and उससे भी पहले एक bearish वाला बड़ा सा कैंडल. एंड बट मैं ले सकता था ट्रेड, मगर मैं अभी भी ले सकता हूँ ओके दिस ट्रेड को. मगर द थिंग इज इट्स on a higher time frame, kind of like a lower high level. If this didn't work out, ये बहुत गंदा वाला डंप करेगा. Or this is kind of giving the move which you can really take. Okay, let's see, let's plan भाई लोग. What if I take trade in here? This is a really bad place to take a trade, but you know what, nothing. Let's see. क्योंकि भाई it's a good level, no doubt. Okay, no doubt.
दिस इज अ गुड लेवल. लिक्विडिटी स्वीप भी हुई है. Demand was also created at a good, what you say, this is inducement level. And the structure, अगर मैं कहूँ तो this is internally bearish at this level. If it fails to break this level, it will continue to head down. तो इसके हिसाब से अगर हम ध्यान से देखें तो according to the internal trend this is bearish. Okay, according to the internal trend अभी ये bearish है. अगर this would have to continue, इसको एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे हमें एक अच्छा सा मूव देखने के लिए चाहिए. ओके भाई पागल लोग यार. ओके ठीक है. अभी 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 एक्सप्लेन करते हैं. अरे भाई ये तो जा रहा है भाई. ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. According to the internal this is bearish, what I was talking about, and externally this is bullish. And externally ये एक kind of level है. This could be a higher low. And you know what, the market is giving the move. Okay, the market structure area of interest over here is like, इधर पे देखो, ध्यान से देखो, sellers liquidity ली market ने. Okay, and this is making a bullish kind of move towards upside. अगर हम ध्यान से इस ट्रेड को लेने की कोशिश करेंगे तो this could work out. If it doesn't, it would fail real badly. Okay, हमको कंफर्मेशंस क्या मिलते हैं इस ट्रेड में? कुछ भी नहीं. आई मीन कुछ भी नहीं का मतलब ऐसा नहीं कि भाई 15 मिनट्स का एक कैंडल क्लोज भी हुआ है. आई मीन अच्छा कैंडल रिजेक्शंस मिला है इधर पे. अगर मैं क्लियर चार्ट दिखाऊं तो these are real good rejections. And you know what, this could be either a lookout range. You know what I mean. ये एक लुकआउट रेंज भी हो सकता है जिसको मार्केट रेंज को फिल करने आएगा. या मैन लाइक दिस इज नॉट अ गुड सेटअप. सेटअप भी क्या भाई, ये अच्छी जगह है नहीं ट्रेड करने के लिए. बायस भी क्या, बायस इज वेटिंग. इफ दिस वर्क्स आउट वी विल प्लान अ ट्रेड ओवर फ्रॉम हियर. ओके, इधर पे ट्रेड लेने का बकवास बात होगा. ठीक है, लाइक लेट्स जस्ट वेट यार. दिस कुड और दिस कुडंट वर्क. Yeah, here this gawar people, completely uneducated shit people, like, well, let's just leave them. See, shit comes off, shit comes out of their mouth like butter. You know what I mean? And they are really shit people. That's why. Okay, don't have any civic sense. Help people, like, yeah. 1 minute स्ट्रक्चर को देखें तो या इस लेवल को ब्रेक कर दिया है. um, इधर पे देखना पड़ेगा मार्केट को. ठीक है, but यार let's try to like not take a trade, or this is a really not confirmed area. ठीक है, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे ओवर हियर. या ये देखो, मार्केट प्लेड लाइक दिस. ओके, तो इधर पे देखते हैं अभी जब मार्केट इधर पे आएगा. अगर ये ऊपर चला गया ना, अगर ये ओके, ऑल ऑफ दीज लेवल्स विल बी अ लिक्विडिटी स्वीप. मेरे को ये एक लेवल प्लेस करने दो इधर पे. ठीक है, वो है.
लाइक अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा, विल सी। ओके, अगर ऐसा कुछ हो जाता है, आई मीन काइंड ऑफ लाइक दिस could be a really good trade, cause market is at that level, that kind of level right now, kind of like, yeah, this is also a decisional point. So let's put a whole box at here. If this continues down, this is going to continue down, as said into the previous live stream as well. BTC क्या कर रहा है? How? Okay, it's actually giving the move. What if you take a trade from here right now? Let me teach you what is risk management and like everything. अगर आप इधर से ट्रेड लोगे, आई मीन लोगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इफ़ यू प्लेस अ ट्रेड राइट ओवर हियर, योर स्टॉप लॉस विल बी समवेयर काइंड ऑफ ओवर राइट हियर, विच कुड मार्केट इजीली ऐसा नीचे आ सकता है टू टेक आउट योर स्टॉप लॉस। तो अर्ली एंट्री में क्या बेनिफिट्स मिलते हैं कि यू कैन प्लेस अ जेन्युइन स्टॉप लॉस। ओके, सो दैट्स द थिंग। 1 मिनट का टाइम फ्रेम अगर देखें तो या दिस इज गोइंग टू गो अप, दिस इज गोइंग टू गो अप। ओके, shitty people have ears as well. Let's see, let's see. हम ये ट्रेड नहीं लेंगे बाय द वे, क्योंकि it's a probable setup, but it's not high probable setup as I think so. But yeah, it could really work as of seeing this structure right over here. क्योंकि here is the seller's liquidity sweep. Yeah, तो strong candles create करते हुए मार्केट भाग रहा है ऊपर की तरफ, तो yeah, this could be really a move. Just a sec, guys. I'll be back. ओके भाई लोग, अबे ये क्या हुई? हैं? ये क्या हुई? सीरियस? सीरियस? ये क्या हुई? तो yeah, this was really what I was talking about, कि आप लोग इधर से ट्रेड नहीं करना चाहिए. So if this closes down this level, it will come to fill this range, lookout range. तब ये होगा एक सेलिंग वाला ट्रेड फ्रॉम इधर से. मगर यार दिस इज अ डिसीजनल लेवल, यू कैंट रियली ट्रेड फ्रॉम हियर, you know what I mean.
So let's just stare at the charts. This is gold. रुको भाई लोग, एक सेकंड, मेरे को एक चीज ट्राई करना है.
Okay. Sorry, guys. Sorry. Okay. I was saying like, isn't this much better to stream like this, guys? Okay. I have both the screens. Um, wait a second, guys. Okay, isn't this good? Like, दो screens भी है मेरे सामने है, तो yeah, I could trade like this. वो भी चलते रहना भाई. Okay, ठीक है. Let me check the stream comments if there are any. Whoa. Okay. Okay, गोल पे फोकस करते हैं for a sec. Okay, इसको थोड़ा इतना छोटा कर देते हैं. Okay, मेन स्क्रीन ये मान के चलते हैं अभी. Okay, 1 minute टाइम फ्रेम पर. Good move, really good move. Expected this. अब चलो इधर पे मार करते हैं लेवल्स को, ठीक है. दिस इज लिक्विडिटी. दिस इज द मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट. Okay, so if this makes a retest out of this level, we will try to take a trade. Okay, let me just plan it real quick. Gold, nahi? Okay, gold. Okay, it's looking really fast, really fast. रुको वेट करते हैं. Okay, waiting is good. BTC is playing out. Okay, I didn't expect that. Okay, चलो. Let's see, bhai. Let's see. We can actually take a trade over here if we plan it correctly. We can actually take a trade over here. Cause here everything in here is liquidity levels. Yeah, you can really buy from here, really. Like, and aim for this. What the 5 minutes time frame says. 5 minute time frame says it's a good. It's not a really good place to enter, but let's see. On a 1 minute after, अरे भाई boom दे दिया. Okay, चल कोई बात नहीं. Let's say it if it retests. अगर retest किया तो तब घुसेंगे, ठीक है. अगर ये गया तो जाने दो, कोई बात नहीं. या फिर हमें ये रिटेस्ट मारकर चलना चाहिए था, कोई बात नहीं. बट दिस प्लान डिड वर्क आउट. ओके, ये जो मैंने ऐसा लाइन ड्रॉ किया, या दैट प्लान. One zero two 0.5. Just a sec, guys. I'm calculating. Well, maybe, yeah, maybe. I don't know, man. Let's see. क्योंकि इसे रीटेस्ट करने देते हैं अभी फिलहाल के लिए, ठीक है. ये मूव हो गया है, तो अभी रीटेस्ट का वेट करते हैं. लाइक ओवर हियर. वो बीटीसी तो भाग गया. बीटीसी भाग गया है, भगोड़े भगोड़े बीटीसी. चलो यार, जाने देते हैं, कोई बात नहीं. आज मेरा मूड नहीं है ट्रेड करने का. दिस वॉज अ गुड स्वीप ऑफ लिक्विडिटी, नॉट गोना लाई. मेरा आज माइंडसेट वैसा नहीं बैठ रहा, ठीक है. सो आई विल काइंड ऑफ अवॉइड taking trades today. Okay,
I will work on it, guys, 100%. तब तक के लिए, yeah, like we have to wait for confirmations and all of that, cause it will protect us. Volume profile, huh? Okay, okay. If we say this over here, this was a level. Like, let's see, guys. Let's see. Now that this has went up, this lookout range is useless. So on a 15 minutes time frame, what do you guys think this could be? I'm really curious what the price will do above here. Cause I will wait till the break of this level, or like let me just wait. Let's see this, okay? Or even see this. Like even this. Let's see what could really potentially happen. Gold is giving retracements. Let's see. Let's plan, guys. Let's plan. Let's not drop the previous plans. देखते हैं क्या होगा. इधर पे क्या हुआ है कि क्यूमुलेट किया प्राइस ने. एक्यूमुलेट नहीं कहेंगे, बायस की लिक्विडिटी स्क्वीज की है. This was a break of structure right over here. ठीक है. So like you can't really take trade right over from here if this didn't give you the confirmations you needed. Okay, you know what I mean. क्योंकि अगर आपने ट्रेड ले लिया होता तो इस चीज़ को फेस करना पड़ता आपको. सीरियस, ये दो कैंडल तीन कैंडल्स के रिट्रेसमेंट पे भी लोग भाग के निकल जाते हैं. अनएजुकेटेड लोग का मट्टा मट्टा समझ नहीं है. You know these guys kind of like they are full of shit. um they are full of shit who are like your neighbors, who are literally uneducated, like fuckers, man. I don't even um kind of try to be a nice guy, cause the truth you can't move away from that. That's why. And they even catch fire in their butts. You know that fire gets caught into their butts. वो कहते हैं ना फायर लग जाना. ऑफ कोर्स 100% होता है उनमें. लाइक लेट्स वेट ओवर हियर गाइस. ठीक है, तो until then I'll mute.
Whoa, 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 whoa. Brothers, see this. You have to see this. इधर पे एक ट्रेड बन सकता है. ओके. ओके भाई, ठीक है, ठीक है. ओके. Let's just buy. Okay. And keep this as stop loss. Kind of like this. And like, yeah, not taking a bigger risk. Cause the market is moving really, really fast. That's why. And अरे भाई BTC. Ah, okay, BTC. We could have traded, but yeah, let's leave it. Let's leave it. Okay. अरे भैया, ये क्या हो रहा है भाई? ये गोल्ड. ये भाई तू क्या कर रहा? Like देखते हैं भाई. Let's manage this. Okay. It's 9-7 right now. I could have been gone to sleep, but I like I've sat for you guys. क्योंकि मैं अभी तक स्लीप करने चला गया होता. ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. अगर दिस कैंडल क्लोजेस रेड, वी आर गोइंग टू जस्ट एग्जिट रेड. क्योंकि अगर ये बेरिश क्लोज करता है तो दिस डजंट मेक एनी सेंस. एनी सेंस. ओके. ओके, जो कि हो रहा है. काइंड ऑफ हो रहा है, बट नहीं हो रहा. Okay, let's just manage this trade. Yeah, we what are the good things we did? We followed our plan. This was the plan, and the market also did like that. इधर तक आने का वेट किया market को, and we are just right over here, seeing what will just happen. Cause in gold, I'm not a good trader. I admit it. Okay, I'm a not good gold trader. तो भाई like let's see यार, if this goes loss, yeah, like it's fine. चलता है भाई. ठीक है, चलता है. कोई बात नहीं, अगर ऐसा होता है तो we'll accept our loss and we'll move on to plan better trades. मैंने ये लिया भी क्यों पता है? आपके लिए. ओके. मैंने ये ट्रेड नहीं लिया होता क्योंकि आई वुड हैव जस्ट गॉन टू स्लीप. इसीलिए. तो लाइक भाई, लेट्स सी दिस कैंडल राइट. इसको बुलिश क्लोज करना चाहिए. ओके. लेट्स सी भाई, गोल्ड इज रियली रियली मूविंग फास्ट. लाइक इसको मुझे 5 मिनट्स पे ट्रेड करना चाहिए, अगर बीइंग ऑनेस्ट. ओके, इट्स रियली नियर टू आवर स्टॉप लॉस. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. लेट्स हैंडल दिस, मैनेज दिस. ओके. ओ भाई, ये तो भद्दा ट्रेड निकला. ओके, दिस
isn't kind of working. Like, not in little terms. You have to give losses to the markets to get even bigger profits. You know what I mean? Like, this was very light analysis, which I did right over here. And yep, guys, just like that, stop loss is hit. What's the stop loss? $24. Fine. Now, listen, what do I do when I hit stop loss? Okay, the thing I do is I close my laptop and I go to sleep. You got that? I close my laptop and go to sleep. That's just it. Okay, so yeah, like, thanks for watching the stream, guys. And if you do like it, um, please make sure to leave a like and like, yeah, support this. Okay, तो भाई like यार गोल्ड का ये ट्रेड भद्दा था. Yeah, I admit it. Okay, ये poor management था, risk management भी ठीक ठाक से नहीं था. Like, yes, मगर BTC का ट्रेड ये चला. Okay, अभी क्या करते हैं कि what we could do is we could stare at the market. Okay, we can really stare. इधर पे स्लोनेस देखने के लिए मिल सकता है 100%. अगर 5 मिनट्स पर देखें तो yeah, this is kind of like consolidation. मुझे kind of like और भी छोटे लॉट से ट्रेड करना चाहिए. That would be good for my risk management. Okay, this is actually really good. I did not see this. Okay. Okay. I was talking about my risk management. No worries. No worries at all. No worries. What you have to do, take a deep breath. Keep that faith into yourself. Just go on pushing. Go on putting the work towards the right direction. And like, you will be there. Okay. The thing with me is, I'm not a good gold trader. I will be. Eventually. Okay, guys. I will eventually be. So, like, I will start to trade this thing on 5 minutes time frame, I guess, to get better accuracy. Okay, 100%. I have to trade this thing in a 5 minute time frame for this thing to work for me. If I trade it on 1 minute, it ain't going to suit my style. Yeah. Like, thank you guys for watching the stream, and let's just see what's going to happen tomorrow. Until then, bye bye.